Hello everyone. So we will start with exercise 9.4 of class 6th. Okay, so are you all ready? Yes? So see the first question. In this question, you have to tell out of these four options which one is linear equation. So as I have explained you, in linear equation we will see only two things. First, the power of the variable should be 1, and second, that equation should contain equal to sign. Okay? Now see, in the first equation two variables are there, x and y. x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो this is a linear equation. And the second condition equal to का sign that is also there. अब second में देखो, इसमें variable की पावर 2 है, तो it is not a linear equation. In this C part equal to is not there, so this is also not a linear equation. And in the fourth part variable is in the denominator also, y और x दोनों denominator में है, so this is also not a linear equation. So this question is clear to you. In this question you have to find out a linear equation, है ना? So the first one is the correct option. Clear? Let's see the second one now. In the second question, linear equation in one variable. Okay, they have added one more line, that is one variable. यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो सकता है. लीनियर इक्वेशन तो होना चाहिए, यानी कि पावर 1 होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, बट उसके साथ साथ बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए. x है तो x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए. Okay, so there can be only one variable. Now see the first option. In the first option there are two variables x and y. तो ये option तो इसी वजह से x नहीं गलत हो गया. In second option we have only one variable. ठीक है, पहली कंडीशन. दूसरा इसकी पावर भी 1 ही है, सेकेंड कंडीशन. तीसरा इक्वल टू का साइन है. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आगे वाले भी चेक कर लेते हैं. इसके अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है, सारे नंबर्स ही हैं. ओके, इसके अंदर x की पावर 2 है, तो only the second one is the answer of this question. Is it clear?